Hi guys, I hope you all are doing extremely well. So in today's session, we'll be seeing about strategic management. So this is a part of our inter group 2 paper 9. All right. So without any further ado, we'll just get started. I'll first introduce what all topics today we'll be covering, and I won't take much time of yours. All right. So first we'll see what strategy is. How do we define strategy? What is strategic management? What are the consequences, the features, and the advantages and disadvantages? Now, hearing all these topics, I'm sure आपको लगता होगा कि this is going to be a पक्का 20 minutes lecture. No, guys, I'll try to complete within 10 minutes, but I'll ensure कि वो 10 minutes आपको fruitful रहें और ये बस आपको याद रहे कि ये points कैसे याद किया जाए. बिकॉज क्या है ऐसे थियोरी सब्जेक्ट्स में काफी बार हमें we face the difficulty of actually remembering things. So I've tried my level best to make it very simple for everybody of us to just memorize it with the help of certain pictures. अभी पिक्चर्स यानी मैंने खुद ड्राइंग किए है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये कैसे मतलब याद किया जाए so that it becomes easy for everybody of us. All right. So yeah. So strategy होता क्या है? Strategy is all about integrating organizational activities and utilizing and allocating. ठीक है, allocating what? Allocating scarce resources, यानी जो resources जो बहुत ही कम हो उसको allocate करें. कहाँ पे? Within the organizational environment. किसके लिए? So as to meet the present objectives. अभी हमें सबको पता है कि स्ट्रैटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन कब बनाता है, जब उसके पास कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. या लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं खुद मतलब इन द सेंस मुझे strategy is strategy is something which we use on a very day to day basis, isn't it? So in that case, स्ट्रैटेजी हम लोग ये वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमें पता है कि एक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव को मुझे अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए मैं क्या ऐसा करूं कि मैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊं. ठीक है. सो इफ यू जस्ट सी, आई एम सॉरी, या, सो दिस इज the organization. So as I told you, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है. So this is दी ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों बना है? क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, इजंट इट? एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक मकसद के साथ बना है. अभी वो बना है तो फिर ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? रिसोर्सेस. सो अभी रिसोर्सेस जैसे ही वो अलोकेट कर देंगे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो रिसोर्सेस को जब हम अलोकेट करते हैं, उसके लिए हम कुछ तो एक बेसिस बनाते हैं ना. दैट बेसिस इज नथिंग बट strategy. So strategy is again about integrating organizational activities and utilizing and allocating these scarce resources within the organizational environment so as to meet the present objective. So मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा objectives meet हो? मैं एक ऐसा strategy बनाऊं. But वो strategy क्या है कि मेरे रिसोर्सेस को मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा अलोकेट करूंगी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के अंदर so that I meet my objectives. ठीक है. सो इट इज अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. तो अभी इसका डेफिनेशन क्या है? सो द डेफिनेशन इज that strategy may be defined as the direction and scope of organization over long term period. ठीक है, which achieves advantage for the organization. और ये कैसे होगा? थ्रू configuration of resources within a changing environment and to fulfill stakeholder expectations. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, so there are many important words in this whole definition, okay, and we cannot miss out on any words. So इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम याद कर सकते हैं? सो हियर अगेन आई विल जस्ट शो अ पिक्चर एंड थ्रू दिस पिक्चर आई hope I am able to make it very simple for everybody of us to learn this whole definition. So definition of strategy is direction. Direction is दिशा. So मुझे थाने जाने की वाशी जाना है, किधर जाना है मुझे? So direction. Direction and
स्कोप मतलब व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए. सो डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ हु, ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ये किस लिए एक एडवांटेज, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, सो मुझे ऐसा मतलब इन द सेंस क्या करना पड़ेगा ताकि मुझे एक एडवांटेज हो. ओके क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे मेरे रिसोर्सेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. ओके सो direction and scope of organization over a long term which achieves advantage for the organization. कैसे? थ्रू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेस. और ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करेंगे हम? इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके विद इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके विद इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड टू फुलफिल स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस. स्टेक होल्डर्स कौन हुए? एक बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर्स कौन हुए? स्टेक होल्डर्स उसके कस्टमर्स, उसके एम्प्लॉयज, उसके वेंडर्स. सो वेंडर्स यानी जिससे मैं परचेज करती हूँ मेरे रॉ मटेरियल्स या मेरे जो भी गुड्स मैं किसी से परचेज करती हूँ, वो सब मेरे वेंडर्स हुए. जिसको मैं सेल कर रही हूँ वो मेरे बायर्स या मेरे कस्टमर्स हुए. तो ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स जो एक्चुअली इन्वॉल्व है, उनके एक्सपेक्टेशंस भी मैं पूरी करूं. तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट strategy. All right, so I'll repeat it one last time. So strategy can be defined as direction and scope of organization over a long period to achieve advantage for the organization. How? Through configuration of resources in a changing environment and fulfilling stakeholders expectations. I hope with this picture in mind आपको याद हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या है. ऑल राइट, सो वी मूव फॉरवर्ड. फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी. अभी स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स हैं? अभी हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता क्या है. तो इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज फोरसाइट. फोरसाइट का मतलब क्या होता है कि वी आर एबल टू सी सर्टेन थिंग्स ओके बिफोर हैंड. Okay, so strategy helps us to do that. Okay, strategy is important to foresight the uncertain events of firms or industries. तो कुछ something, so when I do a strategy I know that for a fact कि कुछ भी गलत होने वाला है, ये मुझे पहले से एक प्री इंटीमेशन या एक अलर्ट मिल जाता है मुझे. तो इससे मैं क्या एक बेटर प्रिपेयर होती हूँ वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. एक सिंपल एग्जाम्पल फॉर स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जाम्पल अभी आर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. तो अभी एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि लास्ट मिनट हम कैसा मतलब अपना रिविजन करें. तो इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि ओके आई नो दैट आई हैव ओनली 10 days लेफ्ट. इन दैट 10 days हाउ एम आई गोइंग टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स. इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी. तो दिस इज बेसिकली फोरसाइट द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फर्म और इंडस्ट्री. Second is deals with long term developments rather than routine operations. यानी क्या कि मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पे नहीं मतलब कंसंट्रेट करूंगी, बट मेरा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यानी क्या कि 5 years फ्रॉम हेंस वेयर डू आई वांट टू गो. सो इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ. सो दिस इज व्हाट नथिंग बट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रादर देन रूटीन ऑपरेशंस. थर्ड इज डील बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. तो जो हमने देखा था स्टेक होल्डर्स, isn't it? Stakeholders expectation, nothing but behavior of customers and competitors. तो strategy is created to deal with them. तो मैं ऐसा स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि मेरा कस्टमर्स मेरे पास ही रहे और कॉम्पिटिटर्स मेरे मेरे एरिया पे कभी टकराए नहीं. Okay, and the fourth one and the last one is strategy is a well defined roadmap of an organization. Very important. So क्या है कि एक road map, एक दिशा मुझे मिल जाता है. We saw that, right? Direction. So if you see guys, these 4 points are actually getting covered in our definition itself, isn't it? So the first one was what? Foresightedness. मुझे future के का अंदाजा आ जाता है. Foresight. Second was long-term development rather than routine operations. Third one is behavior of customers and
competitors, and the fourth one is strategy is a well defined roadmap of an organization. ठीक है, तो इसका क्या है कि it also defines the overall mission, vision and direction of the organization. ठीक है, all right. So moving further, तो further if we see the characteristic of strategic decision, इसका characteristic क्या है? So first of all, it is what? It is long term direction of an organization. तो this we saw कि ये long term के लिए बना है. Strategy जो है, जो भी बनता है वो long term के लिए बनता है. Strategic decisions are normally about trying to achieve some advantage for the organization over competition. So guys, as I told you, the definition again is getting repeated. So it's very important कि हम वो definition को अच्छी तरीके से समझें और वो actually हम इस तरह से learn कर ले कि वो हमें फीचर्स में भी काम आ जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जब भी हमें एग्जाम में लिखना है वो हमें काम आ जाएगा, उसी के साथ हम पॉइंट्स बना पाएंगे. ठीक है ना? All right. So strategy is likely to be concerned with the scope of the organizational activities. All right. Then strategy can be seen as matching the resources and activities to the environment in which it operates. मतलब क्या कि मैं जिस environment में मैं काम करूं उसी environment के साथ मैं देखूंगी कि ऐसा क्या resources available है जिसके साथ मैं अपना so it is all about matching the resources and activities to the environment. जिस environment में हम काम कर रहे हैं उसी के साथ हम अपने resources और activities match करें. ठीक है. And fifth point is strategy can be seen as this stretching an organizational resources and competencies to create new opportunities or to capitalize them. This is also a very important point कि ये जो है जब हम strategy बनाते हैं हमें क्या पता चलता है कि हमारा basically the organization's resources, हमारे पास resources क्या है, हमारी competencies क्या है और हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकता है और उस पे हम क्या कैपिटलाइज कर सकते हैं. A very simple example again what I will tell you is of our exams. So examination के लिए preparation जब हम करते हैं we always draft a plan, isn't it? एक plan बनाते हैं हम कि भाई अभी आई हैव 5 months इन हैंड, सो 5 months में कैसे यूटिलाइज करूंगी ताकि आई बी एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट लास्ट मिनट, मुझे वो रश में नहीं रहना है. इसके लिए मैं क्या करूंगी? सो 5 months मेरे पास है, तो 5 months में मुझे मतलब क्या करना चाहिए, तो ये मैं एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ. इस स्ट्रैटेजी को बनाने के in the time span when you actually prepare the strategy you realize that मेरे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज है और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज में कैसे मैं कैपिटलाइज करूँ ये भी मुझे समझ में आता है. लाइक most of us we complain right कि हमारे पास टाइम नहीं है करके, but then when we actually draft the strategy, when we write down that okay I'm going to do 1 2 3 4 5 6 activities or I'm going to place myself in such a way, तभी मुझे समझ में आता है कि यार मेरे पास टाइम बहुत है. So in the same fashion strategy can be seen as stretching an organization's resources and competencies to create new opportunities or to capitalize them. Further, strategies may require major resource changes for an organization and strategic decisions are likely to affect operational decisions. Okay, so they are going to affect the operational decisions. So again, as I told you, if we learn the definition well, we will be able to formulate these 7 points. So quick recap of those 7 points. As I said, first is long-term direction. All right. Second is achieve advantage for the organization over the competition. Third is it is concerned with the scope of the organization. Fourth is matching क्या? Matching the resources and activities to the environment जिसमें हम काम कर रहे हैं. So that is the fourth point. Fifth point is create new opportunities. तो strategy बनाते समय we get to know the new opportunities और उस पे कैसे हम capitalize करें. And sixth one is strategies may require major resource changes of an organization. And seventh one is strategic decisions are likely to affect operational decisions. So हमारे operational decisions को definitely strategic decisions affect करते हैं. All right. Now moving on to the
कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या है? इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कॉम्प्लेक्स यानी क्या? इट इज लिटिल complicated. Okay, it's complex in nature. The situations of uncertainties जो है, ये अनसर्टिनिटी में ही हम लोग बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाते हैं. All right. And third one is it's likely to demand an integrated approach. Integrated approach का मतलब क्या है? कि everybody comes together and applies the strategy. So it is not only a single person oriented. एक organization में जब भी एक strategy बनता है तो उसमें सब लोग involve होते हैं और सबका contribution definitely रहता है. It's not that only one team. See, of course there is planning which is involved, but then strategy जब बनता है, it is about the whole organization. एक organization का एक motive, एक strategy रहता है, तो then all the stakeholders who are involved in that, they definitely contribute in it. Okay. And fourth one is manage change relationships and network outside the organization. And fifth one is strategic decision will very often involve change in organization. इसका मतलब क्या होता है? Strategic decision will very often involve change. मतलब change यानी क्या कि through strategic decisions we will say that there are certain people who are good at something, all right, but they will not be probably placed in that particular position. All right. So through strategic decision उनका change हम करवाएंगे. So this is what they are trying to say as change in organization. All right. Okay. So further we'll be seeing the relationship between the strategy and competitive advantage. Okay. तो इसको समझने के लिए it's a very very simple concept. So yeah. So relationship between strategy and competitive advantage. तो अभी strategy और competitive advantage में यही एक चीज है कि when will a person basically prefer buying your product? When you actually give a superior quality product. ऑल राइट. एक अच्छा मतलब ब्रांडेड स्टफ या क्वालिटी प्रोडक्ट आप दोगे, लेकिन आप कैसे मतलब एक कम प्राइस में दोगे और सुपीरियर क्वालिटी दोगे तो आपको एक एडवांटेज होगा, या सेम प्राइस में ओके या सेम वैल्यू मतलब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लेस प्राइस में जब आप एक्चुअली ऑफर करते हो मार्केट में, देन यू बेसिकली गेट दैट एडवांटेज. सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस होल थिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो स्ट्रैटेजी बनाने से आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की पूरी चांसेस है. दैट इज you when you develop a strategy, what happens is that you basically attain that that sense where you can actually provide your product in such a मतलब you come to know कि मतलब okay how the competitors are behaving. उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए. क्या आपको आपके प्राइस को लोअर करना चाहिए वही सेम प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, या आप वही मतलब इन द सेंस मेंटेनिंग द सेम प्राइस विल यू ट्राई टू गिव अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. सो व्हाट शुड बी डन? दैट स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू टू डिसाइड. ठीक है. All right. So further, we will just go ahead and see what is the advantages of strategic management. But before that, of course, we will just go through the definition of strategic management. The most simplest one, which I feel amongst the definitions given in our book, is of Alfred D. Chandler, which says determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and adoption of the course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals. So this is also somewhere जो हमने strategy का definition पढ़ा था, it is almost it is in the same lines only. क्या है? Once more we will just read that determination of the basic long term goals. So मैं अपने long term goals को determine करूंगी, उसके बाद
मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे एंटरप्राइज का, वो मैं डिटरमाइन करूंगी। दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स और मेरे ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करूंगी। ये डिटरमाइन करने के बाद क्या है मेरा स्टेप, to adopt the course of action, to adopt the course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals. That is what is strategic management about. So quickly we'll go through the advantages of strategic management. ठीक है, तो इसके एडवांटेज को समझने के लिए आई विल जस्ट show the notes which I have prepared. So I've just written the headers. All right. So iska points I will just explain. You can definitely go through our notes. All right. So isko yaad karne ka tarika kya hai? DSP, FEP. So these are all the initials of those pointers. So which is D stands for discharge, board responsibility. S stands for support, understanding and buy-in. P stands for provide a framework for decision making, and the next one is FEP. So FEP stands for forces and objective assessment, enables measurement of progress, and P stands for provides an organizational perspective. So the key word for actually learning this is DSP FEP: discharge, board responsibility, support, understanding and buy-in, provide a framework for decision making, force and objective assessment, enable measurement of progress and provide an organizational perspective. अभी इसका क्या मतलब है? So discharge is board responsibility. तो इसका मतलब क्या है? Let's assume this person is board of director. ठीक है, तो इसको क्या है कि जब जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका पहला पहला और सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं ना, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कम इन द सेंस इट इज नॉट दैट इट विल जस्ट गो अवे, but the thing is that their responsibility becomes little less in comparison to before strategic management implementation, because strategic management jo hai, it is all about, as I told you in the previous topic also, that it is not about a single person. ये एक organizational driven topic है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर उन्होंने कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाया है, इट इज नॉट दैट ओनली सेल्स विल ड्राइव इट, इट इज सेल्स, it is the accounts people, it is the finance, basically not accounts but finance, it's sales, finance, the back office function, everybody will contribute their parts and then that strategy actually gets implemented. ऐसा नहीं होता है कि it's just only sales driven, it is equally contributed by each and every person who's involved. Okay, so discharges board responsibility, that's the first point. Second, supports understanding and buy-in. तो इसका मतलब क्या है कि everybody are in this together. So this is what, so we are in this together. So इसमें क्या है कि it is very important कि कोई भी strategy, whenever it gets implemented, it's not there's never a blame game involved. Okay, so everybody takes their they know their responsibility and they try to act accordingly. Okay, so that's about supports understanding and buy-in. Provides framework for decision making. So abhi kya hai ki this is the comparison ki if the strategic management was not there, organization will think ki abhi what should I do, व्हाट शुड आई डू, कि कौन से बेसिस में मैं डिसीजन लूं, मुझे पता ही नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बट जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रहता है तो फिर डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सिंपल, बिकॉज आई हैव बेसिस कि आई हैव 1 2 3 4 5 6, तो एक बेसिस है बेस्ड ऑन विच आई टेक अ डिसीजन। एक कॉन्फिडेंस आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में है, it gives up a kind of an assurance कि भाई whatever we are doing with such 1 2 3 4 5 logic and I'm going in the right track. Okay, so that is what is about provides a framework for decision making. All right,
फोर्थ वन इज फोकस ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अभी इसका मतलब क्या है कि इट फोर्सेस द सीनियर मैनेजमेंट टू स्टेप ऑफ फ्रॉम द रूटीन एक्टिविटीज एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। सो यहाँ पे मैंने एक ऐसा मतलब इन द सेंस एक लार्जर पिक्चर इज जस्ट एक आई हैव मेड अ सीनरी आउट हियर। So what I'm trying to tell you here is रूटीन एक्टिविटीज मतलब क्या है कि डे टू डे जो भी हम लोग काम करते हैं वो अपने रूटीन एक्टिविटीज हो जाता है। बट कैसा है कि when we take up strategic management, what happens is that as we know, strategic management is all about long term goals, long term developments. तो मैं क्या करूंगी, मैं आई विल लुक एट द बिगर पिक्चर कि 5 years फ्रॉम नाउ what do I want, where do I want to be. So वो मैं सोचते हुए मैं I will be taking my steps. All right. So I will not so routine activities को छोड़ के I should look at the larger picture. So that is what it actually provokes. So strategic management basically provokes the focus on objective assessment. And the last one which I said was क्या enables measurement of progress. So measurement of progress, so this is a graph, as you can see the progress and the time. So how are we progressing? So we know that within 5 years I want to achieve this particular target or this particular objective. So this objective to be achieved over the 5 years, I am through with first year. So where am I now? So I can do that assessment. So that is the advantage. And then provides organizational perspective. ओके, सो एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव देता है कि व्हाट शुड वी डू टू अचीव आवर गोल्स, वी नीड टू स्टैंड एज वन। सो एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। So basically what I will just correlate this with our situation. We have come to that level that bhai I want to take up a professional course, मुझे करना ही है, that is how we are determined. So ये मेरा मतलब गोल हो गया या मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। वो स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करना है कि भाई दिस इज माय रूटीन एंड आई एम गोइंग टू बी फॉलोइंग दिस फॉर द नेक्स्ट 6 months. So this routine which I have made, this for following that routine, if I have to do that alone, no, of course I have to do that alone because मैं ही जाके एग्जाम लिखने वाली हूँ। Our teachers are not going to come for writing the exam for us, but at the same time, without their support we will not be able to give the exam. So it's like we come together as one unit. So and like how the family also supports us, like when we are studying, your mother, your father would be coming, they would be giving you some kind of energy drinks ki bhai have this, and then you'll have that energy to study more hard. So that's how we can correlate this for learning this point. Okay, so the disadvantages, which is the last part of this session, is इसका मतलब disadvantages का shortcut is life. So quickly, advantages का what was the shortcut? It was DSP FEP. And disadvantages का it is life. Okay, life stands for what? Life stands for, first one is L. L is long-term benefit versus immediate results. This is the first disadvantage which we will study. Second is impedes flexibility. Third one is future doesn't unfold as anticipated. And the last one is expensive. All right. So इसका मतलब क्या हुआ? I'll tell you. So long term benefit versus immediate results. इसका मतलब ये है कि अगर मुझे immediate results चाहिए, okay, that is not possible through strategic management, because strategic management में हमने definition में पढ़ा कि it is about long term, it's long term oriented, ठीक है ना? So that will not, जैसे मैगी 2 minutes में बन जाता है, 2 मिनट में आपको कुछ भी मतलब solution नहीं मिलेगा. So this is about long term versus immediate results. So this will not serve you immediate results, that's for sure. All right. Second, impedes flexibility.
ऑल राइट। सो impedes का मतलब क्या है कि इट ब्लॉक्स योर फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हेन वी डू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा मतलब इट समवेयर गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज हमें मतलब पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कहाँ जाना है। तो हम एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं, वो रूल्स के अंदर ही हम प्ले करते हैं। इसकी वजह से दिस इज टोल्ड एज impedes फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो आई कैन नॉट be flexible, I will be little fixed, a firm रहूंगी मैं। So that is what is impedes flexibility. F is future doesn't unfold as expected. So yeah, so हम लोग भगवान नहीं है, right? We are not gods. So when even if we do strategic management, if we follow strategic management, results are not guaranteed कि भाई हमने जैसे सोचा था वैसे ही होगा। So uncertainties will definitely be there. So that's about it. And E stands for expensive. हाँ, तो भाई दिस इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट दैट इट विल बी वेरी वेरी यू नो cost effective. But having said that, having four disadvantages over six मतलब four disadvantages over six advantages which we saw, I still think that strategic management is what it is. It is desirable and every organization has it. Okay. So with this, I would like to conclude today's session. In the next session, we will see the further topics related to this chapter. Thank you.